Arsene Wenger's recent visit to India has grabbed many eyeballs, and understandably for all the right reasons, because of the inauguration of the AIFF-FIFA Academy in Bhubaneswar. Mr. Wenger had come to India as the FIFA Chief of Global Football Development, and obviously on the pathway to that coveted dream of India reaching that promised land, qualification into the FIFA World Cup. That $1 million question which each and every football fan, which each and every Indian citizen always asks, India कब FIFA World Cup खेलेंगे? Talent identification, coaching, nurturing, इन सभी के बारे में the AIFF FIFA Academy would be working. AIFF Academies, past, present and future is a topic of discussion today. स्वीकार कीजिए नीलांजन दत्ता का नमस्कार ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल, जहां पे आपकी फीडबैक हम लोग के लिए एक ह्यूज मोटिवेशन है. वी हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय द मैसेजेस दैट वी हैव रिसीव्ड एंड आई डू रिआइटरेट दैट आप लोगों को कोई कुछ इशू या कोई चीज हाईलाइट होना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे, डू लेट अस नो. आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई फेसबुक हैंडल नीलांजन दत्ता and my Twitter handle @of Datta Nilanjan, DATTA Nilanjan, Datta Nilanjan. Coming back to this AIFF FIFA Academy rather, Mr. Wenger has been helping many countries all over the world. FIFA, the governing body of world football, all over the world पे football development पे काम कर रहे हैं, and who better than to lead the entire project than Mr. Arsene Wenger, synonymous with having coached Arsenal from 1996 to 2018 या 2018, और उनकी फिलोसॉफी आर्सेनल में और हमेशा यही रहा है, उनको प्रोफेसर कहते हैं आर्सेन वेंगर को, कि वी डोंट बाई सुपरस्टार्स, वी मेक देम. यानी कि हम सुपरस्टार्स खरीदते नहीं हैं, जबकि एक क्लब वर्ल्ड फुटबॉल में एक ट्रेंड है, और आपके पास पर्स है, आपके पास पैसा है, तो आप प्लेयर्स को खरीद सकते हैं. जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, क्लब कोचिंग इज मच मोर इजियर देन कोचिंग द नेशनल टीम ऑफ एनी गिवन कंट्री. बट आर्सेन वेंगर हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन द फिलोसॉफी ऑफ क्रिएटिंग प्लेयर्स. मे बी दोस प्लेयर्स वर टेकन अवे बाय अदर टीम्स लेटर ऑन, अदर क्लब्स लेटर ऑन. सो उसी हिसाब से, वही फिलोसॉफी से प्रोफेसर आगे बढ़ेंगे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ऑब्वियसली नर्चर कैसे होता रहेगा. करंट जो सिस्टम है, इसके बारे में अभी तक उतनी डिटेल्स हम लोग के पास आया नहीं है. आर्सेन वेंगर बोले हैं कि आइडियली आई वुड बी वांटिंग अराउंड 40 यानी कि 40 एकेडमीज ऑल ओवर द कंट्री, सो दैट कोई टैलेंट जो भर के आ रहे हैं, जिसको वहीं पे जगह मिलनी चाहिए, एक चांस मिलनी चाहिए, he or she or he rather at the current moment isn't missed out, हम उसको मिस ना करें. एंड आर्सेन वेंगर का एक कोट भी है, जबकि हम लोग इंडियन फुटबॉल फैंस थोड़ी सी सैटिस्फाइड है विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लू टाइगर्स अगेंस्ट कतार इन कंपैरिजन टू व्हाट आर परफॉर्मेंसेस वेयर इन द पास्ट. Despite having lost the match 3-0, we came to certain positions from where we could have a crack at the goal. We couldn't, that's a different issue, but in the eyes of a very neutral person, in the eyes of someone who knows the technical analysis better than anyone in the world, इस दुनिया में आर्सेन वेंगर को टेक्निकल एनालिसिस में चैलेंज करना कितने लोग कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता, हमारा देश में जो लोग हैं कोई कर सकते, शायद नहीं, दुनिया में कितने लोग चैलेंज कर सकते. और उनकी आंखों पे इंडिया वर्सेस कतार मैच किया था. थोड़ी एक कोट है, तो उस कोट को मैं पढ़ना चाहता हूं जो उसने दिया था मीडिया को. आई reinforced my desire to change things in India. Qatar was from what we could see the best team by a good distance, and that's what we want to change. यानी कि वो बिल्कुल ही इंप्रेस नहीं था इंडिया के परफॉर्मेंस के हिसाब से. तो उसका जो मिशन था, फीफा जिनके लिए आर्सेन वेंगर को इंडिया भेजे थे और जो भेजे हैं, उसको और भी एस्टैब्लिश कर दिया दैट वी नीड टू बिल्ड ए मच बेटर टीम
in India. Arsene Wenger का मानना है कि प्लेयर एडुकेशन इज होल्डिंग इंडिया बैक, और प्लेयर एडुकेशन आप करने के लिए आपको कोच एडुकेशन में जाना पड़ेगा. कोच एडुकेशन इंडिया में चल रहा है बहुत दिनों से, और इंडिया में यदि आप एकेडमीज की हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी टाइमलाइन देखें तो इट वाज इन 2008 में जब यूथ डेवलपमेंट इन इंडिया वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड. एट दैट टाइम the AIFF president was the late Mr. Priyaranjan Dashmunshi, fondly remembered as Priyoda, and the general secretary was Alberto Colasso. In Goa, Mr. Bob Houghton was the coach at that time, and it was there that Mr. Houghton, in conversation with officials, felt that the youth development need to have a certain structure in the country. The next AIFF president, Mr. Praful Patel, took over in 2008. The next General Secretary, Mr. Kushal Das, took over in 2010, and Mr. Patel and Mr. Das carried forward the legacy and gave it a shape, a definite shape of the youth development and the academies in the country. AIFF Academy, जो इससे पहले regional academies of AIFF under the technical directorship of Mr. Robert Bunn, लॉन्च हुआ था 2012 पे 1st of May, I remember the date. नवी मुंबई रीजनल एकेडमी में एट द फादर एग्नेल स्कूल इट वाज बेस्ड. 4 रीजनल एकेडमीज करने का बात हुआ था. द 4 रीजनल एकेडमीज नवी मुंबई के साथ आपका कोलकाता, विच वाज टू बी हेल्ड इन जोका पोइलान पे, because the Arrows project was based out there. It wasn't the Poilan Arrows. Poilans were the sponsors. It was the Arrows project which was based out there in Poilan in Kolkata. And Bangalore, obviously, Bengaluru, Nambanuru, Bengaluru, the other regional academy or Auric regional academy का बात चल रहा था. And obviously all those regional academies regular training करके would be going into the elite academy जो गोवा में था. बहुत सारे प्लेयर उभर के आए थे, बहुत सारे बैचेस उभर के आए थे. द फर्स्ट नवी मुंबई एकेडमी, वहां पे कोच था साजिद यूसुफ दर एंड अकील अंसारी, वन ऑफ इंडिया यस्टरडे प्लेयर्स 90s में. द टायरलेस अकील भाईजान, हमेशा ओमनी प्रेजेंट ऑल ओवर द ग्राउंड. Mr. Scott O'Donnell, at that time he wasn't a technical director, was very closely involved in the project, as was Mr. Robert Bunn. The Arrows project was relaunched in 2017 after the successful completion of the FIFA Under-17 World Cup India 2017, because at that time the federation felt that ये जो बच्चे हैं जिनको इतनी वर्ल्ड एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर दिया गया है, जो वर्ल्ड कप खेला है, इनका नेक्स्ट पाथवे है क्या? Because they were graduating out from the Under-17 batch to the Under-19s. Do they move on to a club? And वहां पे जाके दे जस्ट सिट ऑन द बेंच, लैक ऑफ गेम टाइम एंड देयर एंटायर एम्बिशन, और जो मोमेंटम सस्टेन किए है भारतीय फुटबॉल, नॉट जस्ट द बैच, इंडियन फुटबॉल जो मोमेंटम सस्टेन किए है वो पूरी खत्म हो जाए. तो इसीलिए एरोस प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया गया है. वॉक डाउन मेमोरी लेन 2008. कॉलम जोसेफ टोल, ए मैन हुज नेम इंडियन फुटबॉल उतनी इज्जत से और रेस्पेक्ट से शायद फैंस नहीं लेते हैं, बट ही वॉज द प्लेयर हु गिव अस द फर्स्ट यूथ डेवलपमेंट प्लेयर्स, जो कि आज के दिन पे भी इंडिया नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं. सो द स्ट्रक्चर इन 2008 जो किया गया था, दैट वाज Under-16 ट्रेनिंग इन गोवा, Under-19 ट्रेनिंग इन गोवा, एंड आफ्टर दैट द टीम मूव्स इनटू इंडियन एरोज. नाम रखा गया था इंडियन एरोज बिकॉज एरोज वर शार्प, पियर्स कर देंगे लोगों को. दैट वाज द टाइम व्हेन मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैड ऑलरेडी टेकन ओवर. मिस्टर कुशल दास वाज द जनरल सेक्रेटरी, एंड वो एरोज इतने शार्प होगा कि दूसरे को पियर्स करता रहेगा. तो फर्स्ट बैच of Under-16 to 19 to Under-23 Arrows, and Arrows were not just the definite batch which was training in the National Center of Excellence, the National Training Center rather, my apologies, NTC National Training Center in Goa. The door was kept open for Arrows for other players who had played well in the I-League. So the first batch of Indian Arrows, which are based in Gurgaon, finished 5th
I believe fifth, without any foreign player in that I League. And immediately after the completion of the I League, the entire batch moved out to play the AFC Olympic Under-23 qualifiers home and away against Qatar. उस बैच में एरोज बैच के अलावा एक्स्ट्रा प्लेयर्स लिया गया था स्नेहाशीष चक्रवर्ती, जाकिर मुंडप्पारा and Ornab Mondol, who in the future went on to even captain India. उस एरोज बैच का कॉलम टोल एंड डेस्मंड बुलपिन के हाथ पे ये लोग का सभी का अभिषेक हुआ था, डेब्यू हुआ था. एंड देन सम ऑफ द प्लेयर्स वेंट ऑन टू play under Bob Houghton in 2011 after the Asian Cup had ended in the AFC Challenge Cup, which was held in Kuala Lumpur in Malaysia. उस बैच का some exceptional talent आज के दिन पे भी खेलते. गुरप्रीत सिंह संधू was the Arrows player at that time. Arrows बैच से आए थे. राजू गायकवाड, मैं उन्हीं का बात कर रहा हूं जो इंडिया खेले थे उस एरोज बैच से. राजू गायकवाड Under-23 captain as a central defender. Midfield was a star-studded midfield combination of Lalrindi Karalte, Jewel Raja Sheikh, Shilton De Silva. Unfortunately, a span of injuries robbed Shilton of his his international career. Samne Manandip Singh, and obviously the one and only JJ Lal Peklua. In addition to that, the team had Jibon Singh, Milan Singh, lot many other players. That was the first batch of the Arrows. उसके बाद कॉलम जोसेफ टोल की अंडर-19 बैच जो एरोज में खेला था, आज के दिन पे वो इंडिया खेलता है. वो बैच कौन है? वो बैच में था प्रीतम कोटाल, नारायण दास. बोथ ऑफ देम हैव प्लेड इंडिया. मैं सीनियर इंडिया का बात कर रहा हूं. मिडफील्ड कॉम्बिनेशन ब्रैंडन फर्नांडिस वाज नॉट एन एरोज बट ए AIFF यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. प्लेयर प्रणय हल्दार, शहनाज सिंह, Halicharan Narzari. There was also Anto Xavier, who was there. He didn't go on to play for India. And when the Arrows next batch shifted under Mr. Arthur Pappers in Poilan, Alvin George was added to the batch. Milan Singh came over as an Indian national player. So these were the Arrows which were there. जो खेले थे वहां पे AIFF Youth Development Program and Indian Arrows पे. If we move on to the relaunching of the Arrows project जो हुआ था, उस बैच में अंडर-17 बैच से जो एरोज बैच में खेले थे, आज के नेशनल टीम में जो लोग खेलते, अनवर अली जो सेंट्रल डिफेंडर विद संदेश झिंगन खेलता है, सुरेश सिंह, जैक्सन सिंह, अमरजीत सिंह, राहुल केपी, all of them were Arrows players. Boris Singh was an Arrows player. He hasn't played for India as till now. Dheeraj Singh was there. Prabsukan Singh Gill was an Arrows player. If we move on, Akash Mishra was also an Arrows player under Venki. After Louis Norton Mathos left, Floyd Pindo and then Shanmugam Venkatesh took over the Arrows project. Vikram Pratap Singh was an Arrows player. Rahul KP was an Arrows player. Suresh was an Arrows player, as I said. Rahim Ali was an Arrows player, as I said. The next sensation, Parthib Gogoi was an Arrows player. So मैं ये बोल रहा हूं कि ये सब हम लोग को AIFF Academy से एक टाइम पे मिला था. अभी हम लोग का उम्मीदें और भी बढ़ गया है. We expect more, the fans expect more because उस टाइम पे Arsene Wenger wasn't involved in the project. एक बात है जो हर कोई फैंस while criticizing the federation, whichever regime it may be, थोड़ी सी भूल जाते हैं. Football in the world is not a country-centric sport. Football in the world is a club-centric sport. All over the world, जब आप फुटबॉल एकेडमीज के बारे में देखते हैं, लोग हमेशा क्लब्स के बारे में करते रहते हैं, ला मासिया के बारे में बोलते रहते हैं. हाँ, बहुत सारे कंट्रीज का अपना नेशनल यूथ डेवलपमेंट सेंटर ऑब्वियसली है, बट हम लोग के देश में कितने क्लब्स हु आर देयर प्लेइंग इन द इंडियन सुपर लीग आर डायरेक्टली एंड फ्रूटफुली एंड डूइंग इट एज ए बिग प्रोजेक्ट youth development system, catching them young, catching and scouting players young, the talent identification which Arsene Wenger has hinted at. In fact, हर कोई से आप बात करेंगे, लोग यही बोलेंगे कि आपको ढंग से टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, लोगों को ढंग से आपको कोचिंग करवानी है. यही बेसिक है.
हाँ, ऑब्वियसली द एनालिटिक्स ऑफ हाउ ए टैलेंट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, ये हमको नहीं पता, ये आपको शायद नहीं पता। वो एक टेक्निकल मैन या टेक्निकल कोच और ए स्काउट हु इज इक्विप्ड वही कर सकते हैं, बट दैट्स व्हाट द पाथवे एंड द प्रोसीडियर इज। आज के दिन पे इफ यू लुक अराउंड, सैलरीज ऑफ प्लेयर्स आर हाई। बिल्कुल पैसा कमाए प्लेयर, क्यों नहीं कमाएंगे? प्लेयर्स एक प्रोफेशनल है जिसको करियर अराउंड 30, 31, 32, 33 में खत्म हो जाता है। 23-24 से प्लेयर पैसा कमाना शुरू करता है। दबा के पैसा कमाइए, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल पैसा कमाइए, बिकॉज आपके अंडर क्वालिटी है, इसीलिए ना आपको पैसा मिल रहा है। कोई और प्लेयर को नहीं मिल रहा और आपको मिल रहा है, देयर इज अ रीजन फॉर दिस। पैसा से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द क्लब्स, द अमाउंट ऑफ मनी विच दे आर पेइंग एज ट्रांसफर फीस ऑफ सर्टन प्लेयर्स, ऑब्वियसली कोई कारण पे कर रहे हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। आप कोई प्लेयर को ABCDXYZ को आप एक ट्रांसफर मनी देके आपकी पास आपकी टीम पे ला रहे हैं, ह्यूज एक्सॉर्बिटेंट सम ऑफ मनी इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। आप पे कर सकते हो, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वेरी गुड। उसका एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज यदि हर कोई क्लब अपना यूथ्स डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में, नॉट जस्ट ऑन पेपर बट इन रियलिटी कर लेते हैं, इतने सारे प्लेयर्स को आपको इतनी सारी पैसा देके लेना नहीं पड़ेगा। 10 years the Indian Super League has kicked off, but there have been initiatives, there have been academies, but in the real sense with real talent coming out, how many of them? तो जो 40 एकेडमीज का बात मिस्टर आर्सेन वेंगर किए है, वो 40 एकेडमीज आएंगे कहां से? क्या ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये 40 एकेडमीज को लॉन्च करेगा? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। देयर आर सर्टन एकेडमीज में, देखिए किसी का नाम लेने से दूसरे आदमी बोलेंगे यार मेरा नाम आप नहीं लिए, तो देयर आर सर्टन एकेडमीज जो प्लेयर्स को थोड़ी सी प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियसली द AIFF Academy at the current moment the Arrows project has been shut down। फ्यूचर में क्या हम लोग सुनेंगे? ऑब्वियसली देयर इज अ प्लान फॉर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जब शट डाउन हुए तो लोग क्रिटिसाइज किए थे यार एरोस प्रोजेक्ट शट डाउन हो गया, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि आर्सेन वेंगर का AIFF-FIFA प्रोजेक्ट एकेडमी आने वाला है। तो ऑब्वियसली देयर आर सम थिंग्स इन द पाइपलाइन जिसके लिए ये सब किया जा रहा है और किया गया है। बट एट द सेम टाइम जो मैं बोल रहा था, हाउ मेनी ऑफ दोज क्लब्स आर एक्चुअली इनटू यूथ डेवलपमेंट? एक रेसिडेंशियल एकेडमी आप ना भी करें, एक ढंग से यदि आपको एक प्रॉपर ग्रासरूट कोच, हाई क्वालिटी कोच लेके आप इंडिया में कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई क्लब्स, खर्चा एट ए सेंटर, बिकॉज एक क्लब एक ही सेंटर में करेंगे, दैट सिटी, दैट प्लेस एंड मैक्सिमम द हिंटरलैंड तो केटर करेंगे। यू कैन गो एंड स्काउट ऑल ओवर द कंट्री, देयर इज एब्सोल्युटली nothing that stops you scouting from all over the country। आपको 1 से 1.5 करोड़, that too at a high level, आपको उस पैसे से एक एकेडमी चल जाएगा मेरे हिसाब से। जो AIFF का रीजनल एकेडमीज था उनकी स्काउटिंग हुआ था, there were festivals, there were trials in pockets where football is extremely popular and strong, there were also trials conducted by coaches in other centers, there was tracking and scouting done in the national age group tournaments, and there were also players who came in via references of scouts जिनको एक लंबी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग दिया गया, मिनिमम 1 month or so, बिकॉज 1 दिन या 7 दिन या 4 दिन ऑफ ट्रेनिंग में एक बच्चे को गेज करना इम्पॉसिबल होता है। There were regular medical tests conducted each and every time, and that's how the national team at that time was kind of finalized. Football, I reiterate, is again a club-centric sport. Because उस टाइम पे जब एरोस प्रोजेक्ट था, there used to be a long queue from clubs to get the Arrows players or the under-19 players, to sign them as their own players. There's nothing wrong in that, because उनको एक प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए। इट्स अ विन-विन सिचुएशन, बिकॉज प्लेयर आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर दे हैव ग्रेजुएटेड आउट, नीड अ प्लेटफॉर्म टू प्ले। एंड व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? द प्लेटफॉर्म आर द क्लब्स। बट अगेन दैट क्वेश्चन, व्हाट स्टॉप्स द क्लब्स
from doing it themselves. और जो 40 academies 40 academies का बात आर्सेन वेंगर किए है, the clubs need to put in their efforts as much as the state associations need to put in their efforts. मैं उम्मीद यही करूंगा, ये मेरी पर्सनल उम्मीद है कि ग्रासरूट्स कोचिंग के लिए देयर is a serious kind of a coaching curriculum that's introduced, because in India there are very few grassroots coaches in India where the basics are taught. आपको एक 6 साल 8 साल 9 साल का बच्चा, which Arsene Wenger, which I always mention, and मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिस्टर आर्सेन वेंगर has reiterated the same. एक स्पेन का एक अंडर 9 साल की बच्चा और इंडिया का एक 9 साल का बच्चे के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है. His love with the ball, जितना वो सीखे उस समय सीख के ही करते, but at the time he reaches 12 to 13 to 14, there's a huge difference. The gap उतनी बढ़ गया है और उसके बाद ये गैप और भी ज्यादा हो जाता है, and by the time he's 19, it's physical, the technical acumen and the technical capabilities of the player has reached sky high. Obviously, not all those players who play grass football at the grassroots will go on to be a professional player, because the hand-eye coordination, the street smartness all comes from there. So इतने सारी academies के लिए the state associations need to pull up their socks, the clubs need to chip in as much as the football federation, All India Football Federation under that project वहाँ पे इस project को आगे बढ़ाएगा. Because if one expects that 40 academies would be done by the All India Football Federation themselves, it's ये possible नहीं है, it's impossible. ये तब वो हम लोग को ख्वाब ही रह जाएगा कि हम लोग कब जाएंगे यार, जाते रहेंगे, इस साल देखते हैं, उस साल देखते हैं, और फिर हम लोग का एक्सक्यूज शुरू हो जाएगा, यार हमके पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, हमारे पास मिडफील्डर्स नहीं है, बिकॉज वी वांट दैट टू एंड. बिफोर एंडिंग, ए बिग सैल्यूट जो मैं हमेशा करते रहा हूं, ऑफ द सपोर्ट ऑफ ओडिशा स्पोर्ट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. Their support to Indian football has been exemplary, as much as their support to all other sports has been exceptional. The Arrows project was based out there of the AIFF. The Arrows played in Bhubaneswar not long back when the Arrows project was there. So it was from that time that they were taking care, Odisha Sports was taking care of the Arrows project. The women's senior national team used to be training there. They used to be hosted by Odisha Sports. There was a memorandum of understanding that was already signed long back between Odisha Sports and the Football Federation, and it's reaching a new level altogether, because the pathway कभी एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए. The legacy needs to live, move on, and move together, forward together. That's always the pathway. And also the training centers. At that time, Arrows was the only team in the I-League. At that time, it was the Hero I-League, who used to train under the lights, because Odisha Sports को facilities दिया था. जो वहां पे स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं an athlete in Odisha, in Bhubaneswar, which is the hub of sporting world in the country. It was amazing. And we only believe, not I, we only believe that बाकी सारे स्टेट एसोसिएशंस भी एक छोटी सी क्यू लेके यहाँ से स्पोर्ट्स को थोड़ी सी सपोर्ट दे. बिकॉज ये सपोर्ट ऑल द मोर सिग्निफिकेंट किस लिए है जानते हैं? ये सपोर्ट ऑल द मोर सिग्निफिकेंट है बिकॉज ओडिशा स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन सपोर्टिंग टीम स्पोर्ट्स. एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना, स्पोर्ट को सपोर्ट करना, एक इंडिविजुअल एथलीट को सपोर्ट करना बहुत आसान है. करते हैं वो लोग, बिल्कुल करते हैं, इंकरेजमेंट देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, आपकी स्पॉन्सरशिप आते हैं. बट दिस गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड हॉकी, हैज हेल्प्ड फुटबॉल. और एक टीम स्पोर्ट में रिजल्ट लाना डिफिकल्ट है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाना ज्यादा आसान है. बट दे आर स्टक एंड इट्स द राइट प्लेस, बिकॉज आप सैंग्विन होके वहां पे बैठ सकते कि all the facilities would be provided, all the support would be provided. Obviously, having said that, any academy team needs teams to practice. और ओडिशा में
कितने टीम्स मिलेगा? Obviously, I understand they would be traveling in and around Bengal, Calcutta, जो नजदीक है, to get some more academy teams and other teams to be practicing, because unless you practice makes perfect. आपका गेम टाइम उस एकेडमी एज पे भी मिलना है. We wait for further details from the Football Federation as to what it would be, an under 9, under 11, under 12 or under 14 से शुरू होएगा. But it started. What was there, it's again come back into shape, and the pipeline taking India forward together towards our ultimate dream of reaching that promised land, qualification into the FIFA World Cup. No one better than to lead it than Arsene Wenger. Personally, I believe there needs to be an Arrows project, but it's in capable hands. ये just मेरी मन है. ये बोलना बहुत आसान होता है, क्रिटिसाइज करना लोगों का आसान है. But the Arrows project also did pay us dividends. That's all today on Bol Dada Bol. Keep supporting us. Do subscribe, spread the word. We have been trying to give you good content. AIFF Academies, past, present, and future. The future is bright, and the future may be long. Path may be long, but we are slowly reaching there. The AIFF-FIFA Academy in Bhubaneswar under Arsene Wenger. Take care, stay safe. Bol Dada Bol.